एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। बेसिकली वीडियो का टाइटल है मिस्ट्री ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। और ये जगन्नाथ टेम्पल जो है वो बेसिकली उसके ऊपर हमने रिएक्शन भी दिया था और वो एक डिफरेंट वीडियो थी। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इसको जानते हैं, सुनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Hey guys, about 5 years ago in 2015, on June 15th at 12 o'clock midnight, something very strange happened in Jagannath temple at Puri. This event made all historians turn their heads and wonder what is happening in this small town in India. Electricity was shut down not only in the temple area but in the entire town of Puri. Why? Because Krishna's heart was being removed from the main idol of Jagannath temple and was being placed in another idol. No, I don't mean Krishna's heart in a spiritual or mystical way. I mean it physically. Krishna's actual heart is preserved there. But how can a heart be preserved in original condition for 5,000 years? Because it's a very advanced ancient device. It's not made of flesh and muscle. And people say it can generate power. It starts to vibrate if exposed to light, not just sunlight, any form of light. This is why electricity was shut down in the entire town. The people who touched this heart had to wear thick, heavy gloves, and they also had to wear blindfolds to make sure they do not lay ice on it. Of course, all this sounds strange, but it is true, and we may be looking at evidence of very advanced ancient technology. First, let's look at Krishna's death, which is a mystery by itself. Today, many people do not know about Krishna's death, but ancient sources clearly record his death. Around 3102 BC, roughly 5,000 years ago, Krishna was killed by a hunter in a forest. This was an accident because the hunter was trying to kill a deer. Krishna dies and his body was cremated. It was ritually burnt. But even though Krishna's body was burnt, his heart did not burn at all. It looked like a lump of solid metal with no damage. When the hunter picked up this heart, it vibrated. It was not made of flesh and blood. It was made of a strange artificial material. And I suspect this is some type of electrical device. Think about this. Modern day pacemakers, artificial heart, they are all basically electrical devices. Remember, Krishna was not human. He was superhuman. He was a god. There is clear evidence of ancient technology during his time. They were using electricity. They were using batteries, which I have already demonstrated in a previous video. They were capable of genetic modification, and Krishna's own brother, Balarama, was a test tube baby. This is clearly recorded in ancient Indian texts. So the hunter tried to burn this heart again, but it was impossible to burn this heart. And it started to emit a strange vibrating sound. So the hunter realized it was some special device. So he took this heart and tried to sell it because it looked very strange. So he traveled across India, but no one would touch it. And finally he gave up and put it on a wooden plank and left it in a river. And it was picked up in the ancient city of Puri. When the king of Puri found out it was Krishna's heart, he decided to make an idol and put his heart inside this idol. This idol is the Jagannath idol in the Puri temple.
Inside the idol, the heart of Krishna is still there. This heart is called Brahma Padartha or Divya Padartha, which means divine material. But here's the weird part. Almost all main idols in Hindu temples are made of metal or stone. But this idol is made of wood. You know why? Because it is said that Krishna's heart can electrocute you. It gives electric shocks even today. And this is the reason why the Jagannath idol is not made of metal or stone. Because metals and most stones have high conductivity. But wood is a poor conductor of electricity. The statue itself looks incredibly strange. It's very different than most other statues of Hindu gods. It has these huge eyeballs with very little other features, and it's a massive statue, okay? And Jagannath means the Lord of the universe. Inside the wooden statue, there is a fist-sized chamber in the center, which has the heart. Something else is also strange. The priests have to change the entire idol every 12 years. They have to remove the statue and replace it with a completely new wooden statue. Why? Because the heart slowly damages the wood and weakens the statue. It disintegrates the wood. How does it damage the wood? About 50 years ago, one person is said to have actually seen this heart, and he reported that it was leaking a silvery liquid, which is why the statues get damaged and have to be replaced every 12 years. We can only assume that the device contains mercury or mercury cell or something like that. He claimed that the heart actually began rotating like a chakra when it was exposed to light and vibrated loudly. He said that it was made of an alloy called Ashtadhatu. Ashtadhatu is octoalloy, made of 8 different metals. After this news spread, a new rule was created that everybody should be blindfolded when this heart is being handled, so nobody can disclose its feature to the public. The eyewitness account is so interesting because of its similarity to the arc reactor of Iron Man, right? Both Iron Man and Krishna have these devices on their chests. Both look circular with spinning things. Both seem to be generating power. I know some of you might think the arc reactor is completely fictional, but MIT is building a compact fusion reactor, and you're looking at the computerized model of the reactor. It would look like the chakra or the arc reactor from the top view, but in the front view, it also looks somewhat like a heart. It has multiple chambers, valve-like tubings. Scientists know that this portable nuclear machine is the future. The question is, was it also the past? The temple authorities officially agree they use gloves to handle the heart. They agree that this device is not a metaphysical or philosophical thing. It's an actual physical thing that must be removed from the old idol and placed inside the chamber of the new idol. They have to turn off the electricity and turn off all the lights and do the transfer in complete darkness to prevent it from getting activated. This means that this device is powered by light. I know we always think of solar energy, but really the technology is not far away where we can tap the power from any light source. We already have this technology in the baby stages, okay? And this is why the entire place must be shut down. Because if there's any light, then there is the risk of this device getting activated. What is it? We don't know.
It is definitely some kind of a rotor mechanism, a turbine, a generator, something like that. We know that Lord Krishna was a master of rotor mechanism, okay? He used a weapon called chakra, and this is a very, very advanced device. There are models preserved in temples which are quite ancient. This preliminary model that you see here is from the 11th century. It is 1,000 years old. See how complex it is. And this is just a basic model of the chakra. And the chakra was also powered by light. And if you go to the Jagannath temple in Puri, you will find a model chakra on top of the temple tower. Of course, there's absolutely no filming allowed inside the temple, so I cannot show you any footage from this temple. So there's no way to really confirm what the heart looks like, what it is made of. All this information is from locals, from temple authorities, and the internet. But I hope someday the secret of Krishna's heart is revealed and we get to see this ancient device. What do you think? Was Lord Krishna's heart an advanced device implanted inside his body? Or is it a simple object? Please let me know your thoughts in the comment section. I am Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe, and I'll talk to you soon. सो गाइस, ये वीडियो थी और ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली थी. सरप्राइज लाइक श्री कृष्णा जी जो हैं उनका जो दिल है वो बेसिकली जगन्नाथ जो मंदिर है पुरी में बहुत ही एक यूनिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिली है इसमें कि जो उनका दिल है भगवान श्री कृष्ण जी का, उनका दिल इस मंदिर के बीच में जो मूर्ति है उसमें फिक्स है. सो इसकी रियलिटी मुझे इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता थी. तो जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले इन 2015 जो है इन्होंने वहाँ पर लाइट बंद हुई थी और लाइट बंद करने का जो इंसिडेंट था वो बेसिकली इस तरह से हुआ था कि जो इनका जो दिल चेंज करने का मूर्ति दिल को किसी और मूर्ति में चेंज करने के लिए एक रूल पास किया गया था. और वो रूल ये था कि आंखों पे पट्टी बांधकर जो भी काम करेगा उनको आंखों पे पट्टी बांधनी है, मतलब वो विजिबल नहीं होना चाहिए, किसी को वो दिखना नहीं चाहिए. तो इसलिए लाइट बिल्कुल ऑफ कर दी जाती है हर 12 साल के बाद. तो इसीलिए 2015 में लाइट बंद हुई थी और जो है श्री कृष्ण जी का जो हार्ट है जो मेटल हार्ट वो चेंज करना था दूसरी मूर्ति में, तो इसलिए उसकी लाइट ऑफ कर दी थी. तो खैर ये तो हो गई जगन्नाथ मंदिर की बात, जो कि एक वाकई में ही बहुत बड़ी मेरे लिए एक डिफरेंट न्यूज़ है सुनने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो दिल है वो बेसिकली मेटल का है. अच्छा, सबसे और मेन चीज़ ये कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दिल अभी भी है. तो ये एक चीज़ बहुत ही यूनिक थी मेरे लिए. खैर इससे जो हिस्ट्री में बताया जाता है सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, कि श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी जो डेथ किस तरह से हुई थी. तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट भी मुझे अभी इस वीडियो में आइडिया हुआ है. एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये वीडियो मुझे सजेस्ट की और इस वीडियो में जानने को बहुत कुछ मिला. तो हम जो मेन बात है उस पर बात करती हूँ कि जो बेसिकली जो हंटर था उन्होंने जो श्री कृष्ण जी को जब वो शिकार करते हुए श्री कृष्ण जी को मतलब उनकी जान चली गई थी हंटर की वजह से. तो उस वक्त उस हंटर को क्या इसके बारे में मालूम था कि ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं? क्योंकि बेसिकली मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, तो इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग यू
कि ऐसा कुछ था या फिर उनको पता था कि नहीं पता था, जस्ट वांटेड टू नो। अच्छा, इसके अलावा जो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी श्री कृष्ण जी की जो फाइनल जो चीज़ें होती हैं वो की, उनको उनकी अस्थियां वगैरह सब कुछ। और फिर उसके बाद जब लास्ट में, वैसे तो हम नॉर्मल टेस्ट में देखते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं बचता, लेकिन उनके जो हार्ट है वो बचा, वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो उसने काफ़ी कोशिश की कि वो जल जाए, लेकिन वो नहीं जला, तो जिसकी वजह से वो भी परेशान हो गया। लेकिन उसको फिर ये भी आइडिया हुआ कि मेटल है तो ये सेल हो जाएगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो चला गया। और उसके बाद उसने सेल करने की कोशिश की पूरे भारत में, बट क्योंकि सब तो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को आइडिया था नहीं, तो जिसकी वजह से लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं। तो जब भगवान जी जो हैं उन्होंने उनका जो मतलब उनका हार्ट जो था वो उस हंटर ने मतलब पानी में बहा दिया। तो बहाते वक्त वो एक महाराजा के पास जा पहुंचा इंसिडेंटली और जैसे तैसे करके। तो महाराजा ने जो है वो एक जगन्नाथ मंदिर जो है उसका एक मतलब वहाँ से स्टेप स्टार्ट हुआ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री रही है। लोगों को तो सुनने में स्टोरी लग रही होगी, इवन तो मुझे भी स्टोरी लग रही थी, बट जब ये सारी जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ था तो इसलिए मुझे इसके बारे में आइडिया भी था। लेकिन ये नहीं आइडिया था कि जगन्नाथ मंदिर बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लोगों के लिए। तो अब जाके ये रियलिटी रिवील्ड हुई है इन फ्रंट ऑफ मी कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, जिसकी वजह से मुझे आइडिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली है। तो इस वजह से जगन्नाथ पुरी मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और वहाँ का प्रसाद जो है वो महाप्रसाद कहलाता है और उसको लोग बहुत ही तरीके से खाते हैं। एनीवेज जो है वो इसी वजह से हर साल क्योंकि वो लकड़ी की मूर्ति जो है उसमें उसको शिफ्ट किया गया था हार्ट को, क्योंकि मेटल की जो मूर्ति थी उसमें वो वाइब्रेट करता था और जिसकी वजह से उनको फिर लकड़ी की मूर्ति में इसको हार्ट को मैनेज करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात ये मेरे माइंड में आ रही थी कि ये जो हार्ट है वो बेसिकली ये इतने सालों पहले जो बना, मतलब कि आजकल तो ये सारी टेक्नोलॉजी आ रही है तो लेकिन ये जैसे मेटल का हार्ट तो ये काफ़ी टाइम पहले ही, हज़ारों सालों पहले से ही होता था, ठीक है। तो हम इससे पहले अगर देखें, हम तो सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब आती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन इन चीज़ों से पहले हमने प्रवीण मोहन जी जो है इनकी वीडियो हमने ऑलरेडी एक दो देखी हैं, उसमें हमने रिएक्ट किया था। तो उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि जो बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूर्ति थी, स्टैचूज थे, उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इफ टेक्नोलॉजी, बैग, मेकअप और कॉस्मेटिक एवरीथिंग जो थी ना पहले, मोबाइल, टैबलेट सब कुछ पहले था, तो जो कि वो मूर्तियाँ जो है उसमें आइडिया हो रहा था, स्टैचूज जो बने हुए थे ना, तो उससे पता चल रहा था कि ये वाकई में रियलिटी है। लेकिन ये हम जो कर रहे हैं कुछ नया नहीं है, बेसिकली हम उसको रिपीट कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में ये जो बैटरी वाला जो सिस्टम आ चुका है लोगों को, बल्कि मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बैटरी फिक्स करवाई हुई अपने हार्ट के मतलब सांसों के लिए और हार्ट बीट को चलाने के लिए, तो ये आजकल चल रहा है। लेकिन इस पर और यकीनन आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट यार बहुत बड़ी बात है कि ये आज नहीं बल्कि आज से पहले ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी ऑलरेडी। तो कितना एडवांस टाइम था वो वाला भी, तो शायद उस एडवांस टाइम के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने के लिए। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग वंस अगेन दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें नॉलेज मिली है अबाउट श्री कृष्ण जी के बारे में, अबाउट जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में, क्योंकि
रियलिटी जानकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर इस वीडियो में मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए माजरत करती हूँ, बिकॉज इससे आप लोगों के कोई सेंटिमेंट, आपके दिल को कोई हर्ट हुआ हो मेरी किसी बात से, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।